Good morning, student. I think you all are fine and you have revised till paragraph 4 in Honeysuckle. Now I will start from paragraph 5, page number 9. As you know that Elf promised that he will complete the homework. So he was true to his word, and true to his word that little elf began to Patrick's homework. और वह अपनी जुबान पर सत्य था, अपने शब्दों को फॉलो कर रहा था. वाट ही हैड मेड ए प्रॉमिस टू पैट्रिक एंड दैट लिटिल गर्ल बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क. और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. देयर वाज वन ग्लिच मतलब देयर वाज only one fault, only one problem for him, that the elf did not always know what to do and he needed help, and that time he was unable to decide what to do. So he needed help. He felt that I need help of Patrick or anyone. Help me, he had said. हेल्प मी, मेरी सहायता करो प्लीज़, मेरी सहायता. ही हैड टू से, उसे कहना पड़ा. द पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे एंड पैट्रिक ऑलवेज हेल्प हर. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विक्ड while reading the Patrick's homework. That little person was unable to know some difficult words, so he always asked Patrick's uh, always asked to Patrick's, and Patrick always searched from dictionary as whatever he make availability of that difficult word. Get me dictionary, and request for dictionary. Know what even better, look up the word and sound in by each letter. And he told whatever better and look search the dictionary and sound it by one letter and search it by one letter. When it came to maths and when it the term was math, जब टर्म की मैथ की बारी थी, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक मतलब पैट्रिक वाज फुल्ली अनेबल बिकॉज ही वाज नॉट स्टडिंग मैथ, ही वाज वीक इन मैथ एंड दैट मैथ solution was not in dictionary. So he was out of luck. What are times tables? टाइम टेबल्स क्या होता है? he did not know. the elf shriek. एल्फ श्रिक मतलब बोला, चिल्लाया. हाँ, एक तेज दबी हुई आवाज़ में बोला, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. और हम एल्फ्स को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. वी शॉर्टेस्ट पर्सन नेवर नीड सच टाइप ऑफ वर्क. And addition, subtraction and division and fraction. And same thing was with addition, subtraction, division and fractions. There was no need for elves. So how can he do? It was impossible for him. Here, sit down. यहाँ बैठ जाओ beside me, मेरे बगल में. You simply must guide me. You have to simply guide me how it will be solved, and I will do. Elves know nothing of human history. And second subject SST, he did not know about human history. To them it is a mystery, and that was a mystery for him. So the little elf already shouted, and that time when the term of SST came and he was unable to know that thing, so from he shouted more than earlier, just got louder and speak loudly. Go to the library, I need books. Please go to library, Patrick, and bring some books for me related with history. More and more books, and you can help me read them too. If there is more books, you can help me easily. As a matter of fact, if you will see the reality, every day and everywhere that little elf was a nag. Every day and every time that little elf was creating some problems, some difficulties before Patrick's, and Patrick was working harder than ever
and was it dragged, and Patrick was doing work harder and harder than earlier, because that elf was creating problem. Such and such word I don't know, such thing I don't know, and he was taking help of Patrick, and Patrick was finding the solution of that problem. What will be meaning of such and such? What will be solution of this addition? What will be solution of this history? So Patrick was doing more and more harder than earlier. He was staying up night and had felt so worried. Was going to school with his eyes puffed and like ब्लेरी। वह काफ़ी रात तक जगता था और थका हुआ, नेवर फेल्ट फेरी, कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल एंड विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, अपनी सूजी हुई, पफ्ड एंड ब्लेरी मतलब सूजी हुई आँखों के साथ वह स्कूल जाता था। ही वॉज अवेकिंग अप नाइट and never felt weary, and his eyes were so swallowed, but he never left the school. He always goes to school. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to do. And last day when school arrived, and this day elf was free to go. According to promise, now semester was over, his homework was completed, and school was over, and elf was free to go. एल्फ जो है घर जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वाज नो मोर, इट वाज कंप्लीटेड। सो ही क्वाइट एंड स्लाइली स्लिप बैक टू डू, इसलिए आफ्टर फिनिशिंग हिज प्रॉमिस ही क्वाइटली एंड स्लाइली मतलब बड़े चालाकी से बैक डोर मतलब पिछले डोर से वो निकल दिया, चल दिया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक ने ए ग्रेड प्राप्त किया। इन हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड एंड हिज फ्रेंड्स वेयर सो सरप्राइज्ड हाउ पैट्रिक गॉट एज। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए, एंड फुल ऑफ प्रेज एंड प्रेज्ड हिम, उसकी खूब प्रशंसा किए। एंड हिज पेरेंट्स, व्हाट अबाउट हिज पेरेंट्स, दे विल आल्सो हैप्पी। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और दे वर मच सरप्राइज कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल किड बन गया, एक एग्जाम्पल किड बन गया, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ किया। डिड हिज कोर्स, अपना कोर्स कंप्लीट करता था। एंड वाज चीयरफुल, प्रसन्नचित था, खुशहाल था। एंड नेवर रूड, और कभी चिढ़ता नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एप्टीट्यूड, और उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया था, एक नया नज़रिया आ गया था, दृष्टिकोण आ गया था। यू सी इन द एंड, आपने अंत में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल द होमवर्क। ही वॉज थिंकिंग दैट टिनी मैन हैड डू द ऑल द होमवर्क। Patrick was still thinking that little man has completed his homework, but I will share a secret. लेकिन writer is saying, I want to share a secret, एक रहस्य आपको बताना चाहता हूँ, just between you and me, तुम्हारे और मेरे बीच में। It was not the elf, यह कोई elf नहीं था। Patrick had done it himself, Patrick स्वयं किया था, Patrick इसे स्वयं किया था। Because whenever that elf creating a problem, who was solving? Only Patrick. Only Patrick find out the meaning, only Patrick find out the solution of addition, subtraction. So all the work was done by only Patrick. So he was graded A. And at last I want to say, if there is any problem, so that is not problem for you. That problem make your inner power stronger to come out. So don't feel the problem as a problem, just problem things as a challenge, and make your attempt to find the solution of that problem. Okay, now revise and do on your copy, and if you have any problem you can ask me. Dear student, if you like my video, so please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.